Hello children, how are you? I hope you all are doing good. My name is Radhika and today we are starting a chapter that name is underwater animals. So if you study about marine biology, you will find millions of species of sea animals, okay? जो कहाँ रहते हैं बच्चों? Salt water habitat में रहते हैं. So they live in or near rocks, ponds, rivers, oceans, beaches, mangroves and sand dunes. So in this chapter, picture of some sea creature are given below. आपको उनके correct नाम के साथ मैच करना है, okay? So look at the first picture. The first picture is किसके picture है बच्चों ये? That is of shark, okay? So one का आंसर होगा H, shark, okay? Come to the second picture. So second picture ये क्या है बच्चों? That is jellyfish, okay? So G. तो इस तरीके से आप मैच करते जाएंगे. Jellyfish. थर्ड आ जाओ, पता ही लग रहा है आपको क्या है बच्चों ये? Starfish. So थर्ड का आंसर होगा I. Now match it with I. Next है fourth one. So the picture is of crab, okay? So that is J, crab. Come to number 5, okay? So the picture is of eel. So eel से आप मैच करेंगे. Come to picture number 6 and the picture is of किसकी है बच्चों? ये भी आपको पता है, ये देखने से dolphin, okay? Now next, what is that? So that is flounder. So you have to match with that. Fine. Now next is, this is the picture of oyster. Oyster जिसमें से मोती निकलता है, पर्ल निकलता है, right? उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? दैट इज सी हॉर्स, ओके. एंड पिक्चर नंबर 10 ये क्या है बच्चों? दैट इज सी लायन, ओके. सो लाइक दैट यू हैव टू मैच विद द प्रॉपर एनिमल विद द प्रॉपर पिक्चर. टिटबिट्स. So whoopcomb shark has a flattened body and a patchy skin which makes it look a lot like a piece of old carpet. And bottlenose dolphins can leap up to 20 feet as high as a house. And in the 1860s they became the first dolphins to be captured and shown to the public. So this is the chapter बच्चे related to sea creature. I hope आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और इनके नाम को याद करके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अपने बुक में करेंगे.